Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Today I came up with another DIY जो काफ़ी simple भी है और interesting भी है. So without wasting any time, let's get started. For the first DIY, I am taking this steel container or tiffin box. Next I am using this paint and यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक teal blue color. अब एक कलर को मैं इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. मैं यहाँ पे कोई बेस कलर नहीं यूज़ किया, डायरेक्ट ये टील ब्लू कलर ही अप्लाई कर लिया. ठंड लगने की वजह से मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम आई है एंड इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है. तो शायद आप सबको मेरी वॉइस सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है गाइस, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. टील ब्लू कलर प्रॉपर ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे पहले से ही एक पैटर्न ड्रॉ करके रखी थी एंड नाउ मैं अब इसे पेंट कर लूँगी एक्रेलिक कलर से. Here I am draw simple flower design on it, but आप चाहो तो कुछ और भी पैटर्न भी आप ट्राई कर सकती हो. जब मेरी ये पेंट प्रॉपर कंप्लीट हो जाएंगी एंड ड्राई हो जाएंगी तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वार्निश यूज़ कर लूँगी ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो और शाइन भी करे. ओके, तो नाउ इट्स कम्प्लीटली रेडी. तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये टिफ़िन बॉक्स पेंटिंग आइडिया कैसी लगी. फॉर द सेकेंड DIY, here I am taking my phone charger and मैं इसे भी पेंट कर लूँगी. सो here I am using येलो एक्रिलिक कलर. येलो पेंट अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर एक फ्लावर ड्रॉ कर लूँगी. Okay, now it's completely ready. थर्ड DIY में आई एम टेकिंग दिस पुराने के होल्डर. मैं इसे ही पेंट करूँगी. सो एट द फर्स्ट हेयर आई एम अप्लाइंग वाइट एक्रिलिक कलर फॉर द बेस एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग स्काई ब्लू. नाउ आई एम ड्रॉ अ लिटिल फ्लावर ऑन इट. मैं इसे थोड़ा सा सिंपल एंड एस्थेटिक लुक देने की ट्राई किया है, बट आप चाहो तो कुछ और भी डिज़ाइन आप ट्राई कर सकती हो. के होल्डर के बचे हुए इन हिस्सों को भी मैं पेंट कर लूँगी येलो एक्रिलिक कलर से. नाउ इट्स रेडी.
So that is for today's video. I hope you all like this idea. If do, please give this video a like, share and subscribe to my channel. And if you recreate these DIYs, make sure you post them on Instagram and tag me. Thank you so much for watching this video. I will see you all in the next video soon. Till then, take care. Bye.